back to my channel, and today we are going to study chapter 12 non-finite verbs, and this is for class 8th. So let's begin. Learning time. Verbs can be finite and non-finite. So what is finite verb? Finite verb वो verb होते हैं जो tense और person के according change होते हैं. Finite verbs के different form होते हैं different tenses के according. For example, if I say I go to school, राइट, आई गो टू स्कूल, और जैसे ही मैंने पर्सन को चेंज किया, यहाँ पे लिखा शी, तो ये हो जाएगा शी गोज़ टू स्कूल. ठीक है, और इसमें वर्ब क्या था, दैट इज़ गो. तो ये क्या है, वर्ब फाइनाइट वर्ब है. क्यों? क्योंकि ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा. जैसे कि मैं पास्ट टेंस बनाना चाहती हूँ, तो आई अब गो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वेंट. आई वेंट टू स्कूल. तो ये वर्ब के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं, इसलिए हम इनको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. ठीक है. नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन पर टेंस का, पर्सन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से लाइक आई गो टू स्कूल टू स्टडी, आई गो टू स्कूल टू स्टडी. अब यहाँ पे अगर हम आई को चेंज करके शी कर देते हैं, तो यहाँ तो चेंज हो जाएगा, शी गोज़ टू स्कूल टू स्टडी. ये जो टू स्टडी आई के साथ भी सेम था और शी के साथ में भी टू स्टडी सेम है. तो ये क्या होते हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग. Now, in sentence B, the present participle of the verb start is used as a verb. Its form is not influenced by the subject you. तो जब वो इफेक्ट नहीं होता है तो वो नॉन फाइनाइट हो जाता है. अब क्वेश्चन में हमें बताना है, अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब्स एंड सर्कल द नॉन फाइनाइट वर्ब्स. सो अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब्स. अब फाइनाइट वर्ब्स में क्या आ जाएगा, लाइक्स, अंडरलाइन हो गया. टू विजिट क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया, तो इसको सर्कल कर लो. रोहन एंड सोहन एन्जॉय क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया. और प्लेइंग जो है वो नॉन फाइनाइट हो गया, तो इसको सर्कल कर दो. रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट. सो रीडिंग इज़ क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, मतलब कि ये चेंज होगा. इसके बाद है शी लव्स क्या है, ये जो है आपका, सॉरी, फाइनाइट में हमें सर्कल करना है, और सॉरी अंडरलाइन करना है. तो इज़ में अंडरलाइन करेंगे, लव्स में अंडरलाइन करेंगे. शी लव्स. अब स्विमिंग क्या है, स्विमिंग जो है वो नॉन फाइनाइट है. इट्स ठीक है. अब यहाँ पे मंजरी हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड. तो मंजरी क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, और टू वर्क क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया. रमन्स पास टाइम इज़ क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, और प्ले जो है, सॉरी, फाइनाइट में अंडरलाइन करेंगे. इज़ क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, और टू प्ले क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया. हैदर वॉज, ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, इसको अंडरलाइन कर देंगे. और इसके बाद में वियरिंग क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया. हैड क्या हो जाएगा, हैड जो है वो फाइनाइट हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद में वॉचिंग द मूवी वी एट सैंडविचेस. सो वॉचिंग द मूवी ये क्या है, फाइनाइट हो जाएगा. फाइंडिंग द डोर ओपन आई वेंट इनसाइड, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब्स. क्लियर, मतलब चेंज हो रहा है पर्सन और उसके हिसाब से. अब इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, इन्फिनेटिव्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द वर्ब प्लस टू, जो हमारा टू के साथ में बेस यानी कि जो रूट वर्ब फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल टू मेक, टू ईट. तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. नाउ एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडजेक्टिव. तो इन्फिनेटिव तो एक तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडजेक्टिव भी होता है, और बेयर इन्फिनेटिव भी होता है. बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें हम टू नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट रूट वर्ब लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई बेड हिम गो. तो आई बेड, जैसे कि कुछ वर्ड लाइक कि बिड, लेट, मेक, सी, लाइक आई लेट हिम गो. तो लेट भी क्या करता है, अपने साथ में टू का यूज़ नहीं करता है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव लेता है. ठीक है. सो द बेयर इन्फिनेटिव इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द वर्ब्स विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट. सो ये क्या है, ये अपने साथ में बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं. ठीक है. द इन्फिनेटिव इज ऑल्सो यूज्ड विदाउट टू आफ्टर हैड, बेटर,
would rather sooner, like you had better ask his permission, not better to, you had better ask his permission. He would rather play than work. The two infinitive after adjectives, like it's good to talk, it is good of you to talk to me, it is important to be patient. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो टू टॉक है या टू बी, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस टू बी मतलब इज एम आर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसके बाद में एडजेक्टिव के बाद में टू प्लस इन्फिनेटिव वाला फॉर्म चल रहा है, इसके बाद पूरा सेंटेंस हम बना रहे हैं. ना लुक एट दिस चार्ट. यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये टू बी हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया और यहाँ पे टू प्लस इन्फिनेटिव. तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है. नाउ द इन्फिनेटिव वर्ब विद एडवर्ब्स. तो क्या होता है, टू प्लस इन्फिनेटिव इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली विद एडवर्ब्स टू एंड एनफ के साथ में इसका यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, इनाया हैड टू मैनी बुक्स टू कैरी. ओके, द पुडिंग इज़ टू हॉट टू ईट, शी इज़ टू टायर्ड टू वर्क. ठीक है, तो जो नॉर्मली टू इन्फिनेटिव होते हैं वो इन्फिनेटिव एंड एवरीथिंग दैट फॉलोज कैन बी रिमूव लीविंग अ सेंटेंस दैट स्टिल फंक्शंस ग्रामेटिकली. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो टू और एनाफ होते हैं वो रीज़न को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को. टू और एनफ जो है जब ये प्लेस्ड होते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इनाया हैड टू मैनी बुक्स मतलब उसके पास इतनी किताबें हैं कि उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. अंडरस्टैंड. लाइक द पुडिंग इज़ टू हॉट मतलब इतना ज़्यादा गर्म है कि खाने में मुश्किल हो रही है. नाउ द टू इन्फिनेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स. अब क्वेश्चन वर्ड्स में क्या है, लाइक आस्क, डिसाइड, एक्सप्लेन. अब यहाँ पर शी आस्क्ड मी हाउ टू यूज़ द वॉशिंग मशीन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. नाउ टेल मी व्हेन टू प्रेस. अब देखो यहाँ पे हाउ टू यूज़, व्हाट टू डू, व्हेन टू प्रेस, वेयर टू पुट, whom टू कॉल. ठीक है, तो ये अपने साथ में इन्फिनेटिव लेते हैं मतलब टू प्लस रूट वर्ब. ज्वाइनिंग पेयर्स. फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देखो दो सेंटेंसेस दिए गए हैं. ही हैज़ सम बिल्स, ही मस्ट पे देम. लाइक ही हैज़ सम बिल्स, अब यहाँ पे ही और मस्ट हटा देंगे, टू पे हो जाएगा. अंडरस्टैंड. लेट्स सॉल्व अदर एग्जाम्पल्स नाउ. Now it's a practice time. Rewrite the following sentences using the introducing it. The first one has been done for you. Now to play with fire is dangerous. तो हमें it से start करना है, तो हम बनाएंगे it is. अब it से सीधा यहाँ से उठा लेंगे. It is dangerous to play, ये यहाँ आ जाएगा with fire. Understand? अब यहाँ पर है to deceive your best friend is disgraceful. तो you can make it is. I'm just writing over here. It's enough space. It is disgraceful to deceive your best friend. Understand? Now the next is to seek in the dark is difficult. So it is difficult to see in the dark. To see in the dark. Next one, to take things what belongs to others is wrong. So you can write here, it is wrong to take things what belongs to others. Understood? Now the next one, to sit in the sun or in a cold day is pleasant. So you can write like that, it is pleasant to sit in the sun on a cold day. Okay? Now the next one, to hurt your friend's feeling is not good. So it is not good. You can start like that. It is not good to hurt your friend's feelings. Now the next one, to start the car with such a weak battery, it is not easy. So it is not easy to start the car with such a weak battery.
Now the next, join the following pairs of sentences using infinitives. The first one has been done for you. So you can see here there are two sentences. Asha visited the orphanage. She wanted to donate some money. So you can see here Asha visited the orphanage to donate. She and wanted हटा दिया. ऐसे ही मैं आपको पूरा सेंटेंस लिख के नहीं बता रही हूँ. आई एम जस्ट कटिंग द सेंटेंसेस विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. She went home to clean it. We will write she went home to clean it. For the next one, Avijit has two children to give them a higher education. The group went to the seashore the group went to the seashore to enjoy. My father paid a visit to Madurai to see the Meenakshi temple. Nilakshi visited her friend to cheer her up. She wanted is not required. The meeting should start at 6. It is very important. So we will write like that. It is very important for the meeting to start at 6. It is very important for the meeting to start at 6. Now here you can say it's a participles. Participles, what is participle? That is the verb past form. So there are three types of participle, that is present participle, past participle and perfect participle. So what is present participle? The present participle is always active and it donates in incomplete action or state and it always ends ing. For example, I heard her singing when I entered her room. We met the boy carrying a basket of fruits. Do you see the girl climbing the tree? What is past participle? When you are adding ed, en, dt and turning it into past verb, that is past participle and it works as an adjective. For example, she crawled out the unfastened window to escape the fire. Here, unfastened is used here as an adjective because they are describing about the window. Now you can see here the recipe requires 3 beaten eggs. So it's telling the quality of eggs. Which kind of eggs? Beaten eggs. Now what is perfect participle? Having plus past participle of form of the verb is called perfect participle and it indicate an action that was completed at the some time in the past. For example, having done with their meeting, they got down to work. Next one, having rested, Rajat and Sonali started their journey again. Okay, solve the questions. Combine the following sentences using a participle. The first is done for you. Now you can see there are two types of sentences. The first one is there are two guards outside. They are waiting to meet you. So when we are joining, we are writing like there are two guards outside. Then we will remove there and we are making waiting to meet you. So same will be done here. Tomorrow there will be another bus to taking you to school. So to take ना लगा के हम यहाँ पे present participle लगाएंगे taking you to school. Hearing the news, अब यहाँ पर मतलब कि ये incident हो चुका है. Hearing the news, comma, they shouted with joy. Next one, don't step on the mouse trap. It is lying on the doorway. So you can write like that. Don't step on the mouse trap lying on the doorway. Next one, the boy is my brother taking the salute in the march past. We found the car key lying under the bed. Next one, Amarenda turned off. Now the next one, Amarenda turned off his laptop. So here Amarenda turned off his laptop and went out for a walk. Or you can write turning off his laptop. You can write like that here. I'm just writing over here turning off his laptop, then put a comma. Then you can write Amarenda went out for a walk. Next one, this is the pamphlet and the next question is it gives you all the information on the district. So this is the pamphlet that gives you all the information on the district. Now the next one, not gives, no, it's giving. हमें participle बनाना है ना, sorry, it's giving all the information on the district. Now next one, we noticed some men digging on the road. They were हटा देंगे.
we notice some men digging on the road. The signboard is broken. It is lying outside the house. So you can write like that. The signboard laying outside the house. Put cross the it is. The signboard lying outside the house is broken. Okay. Alright, so it's again learning time. Here again, it's a brief description of participle which you can read by yourself because the chapter is lengthy, so I'm not discussing in detail. Now, uh, here, being a fine day, we started the work. So, being a fine day, we started the work. Having failed in the first attempt, he made he made no further attempt. यहाँ पे by him कट कर देंगे. Having no friends in Delhi, he couldn't get to know the streets. He couldn't get to know the streets. I'm writing here. He couldn't get to know the streets. Next one. Looking at the window, I saw. यहाँ पे कॉमा करके लिखेंगे. I saw a lizard was creeping on the wall. Next, returning from school, I found the cycle tire was burst. Entering the room, I found the light was dim. Okay. Now let's find about gerund. Gerund क्या होते हैं? Gerund present participle होते हैं और जो noun का काम करते होते हैं. ठीक है. तो जो वो ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का भी काम करते हैं और प्रपोजिशन का भी काम करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं द फर्स्ट वन. लुक एट द सेंटेंसेस बिलो. राइट वेदर द अंडरलाइन ing वर्ड इज एक्टिंग लाइक अ नाउन, पार्ट ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव. सो लेट्स सॉल्व इट. What an amazing movie. I want to watch it again. So what an amazing movie. So amazing here, movie is described. Which kind of movie it is? It is an amazing movie. So this is what? This is adjective. Now, speaking English well takes a long time. So here what? Speaking is noun. Speaking English well takes a long time. Now the next one, he cares about getting a good job. So he cares about what? Getting. So this is getting is what? Noun. Next, shh, I'm trying to sleep. Here it is acting as a verb. My friends and I was sitting in a cafe and talking. Yes, this is verb. Next one, the directions were very confusing. It's mean it is adjective. Next is they have been studying. This is verb. They have been studying. Now she loves traveling. Traveling is noun. People enjoyed the exciting roller coaster. So which kind of roller coaster? Exciting. So this is what? Adjective. Playing for the first time. This is noun. Alright, now let's solve the exercise number G. Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. The first one has been done for you. So the first one is watching a football game can be quite exciting. The second is a dash portrait requires a lot of concentration. So here painting, and here we are making gerund, and its painting is working here as a noun. So painting a portrait requires a lot of concentration. Nasreen enjoys reading detective novels. I enjoyed eating ice cream. Next one, they don't know much about developing photographs. So develop will change into developing, and developing photographs. Okay, now the floor needs washing. So we will write here washing. Next one, has Vihan finished? This is pasting. Has Vihan finished pasting the stamp in the album? Next, she likes playing badminton in the evening. Next one, here you can say lending. Lending money to people or borrowing money from them is not very wise. And the next one is playing musical instruments here will disturb the neighbors. Alright, now this is the last exercise, I think, if I'm not wrong. So yes, rewrite the following sentences using gerunds. Now they like skiing. Skiing. We went to learn English. So to learn will change into gerunds, that is ing form. He went learning English and French. Sabina forgot calling. So here we will write calling her friends. Then I like having lunch with you. Now children love playing.
We will write here playing. Then Karuna neglected telling the whole story. Next, she prefers eating. I remembered locking the door. Now fill in the blanks with the infinitive or gerund as required. So please remember to bring the children from school. The second is please try to finish your homework on time. Now she is traveling. She is traveling to other countries. Now the next, Barun finally admitted lying, lying, lying about cheating in the exam. The school has agreed to postpone. Please stop making excuses or please stop making a noise. The baby is sleeping. Now, today we'll continue working from our workbooks. The children enjoy going to the movies. Next one. I prefer eating homemade food rather than junk food. My mother enjoys exercising, exercising at the gym. Now, students' corner, match these verbs with the right pictures. Ab you are supposed to hear sing. Just find out where the boy is singing. So the first one will match with this. So you can see here, you can write here. The boy is singing a melodious song. Next one, the next picture is ring. So where is the ring? You can find out like the phone is ringing, right? The phone is ringing loudly. Now the next one, burn. The fire is burning. So you can write like that. Now the next one, my mother is driving the car. Okay, then also make sentences using the present participle. So you are supposed to make using present participle of the verb. तो present participle में क्या हो जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पता है, जो मैंने आपको पहले से डिस्कस कर रखा है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें क्या हो जाता है, आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है, राइट? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लाइक आई हर्ड हर सिंगिंग, तो यहाँ पे आप जो बनाओगे, क्योंकि मैंने नॉर्मल सेंटेंस बना दिया, तो अब आपको नॉर्मल सेंटेंस नहीं बनाना है क्योंकि मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन इज़ अबाउट कि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप बना लोगे लाइक आई हर्ड द बॉय सिंगिंग, I saw the lady driving the car. I saw burning the fire. Or you can see here, you can say here, I saw the boy writing the letter or reading the book, right? So you can make sentences like that. So thank you so much for watching. Use your mind and do this. And if you face any problem, do comment.